Good morning, student. Earlier we have studied about the other type of valvular heart disease like mi- mitral valve stenosis, mitral valve regurgitation, mitral valve prolapse, and in the continuation with that, let's begin today lesson, that is aortic valve stenosis and aortic valve regurgitation. So, firstly, we will we will start the topic, that is aortic valve stenosis. So in the aortic valve stenosis, there is failure of aortic valve to close tightly, cause backflow of the blood into the left ventricle. That means there is the stenosis in the aortic valve. That means there is narrowing of the aortic valve, and which is failed to close tightly, and which cause the backflow of the blood into the left ventricle. So firstly start from the definition. Aortic stenosis, it is a narrowing of the aortic valve opening, and it restricts the blood flow from the left ventricle to the aorta, and it may also affect the pressure in the left atrium. Aortic valve stenosis occurs when the heart aortic valves narrow, and this narrowing prevents the valve from opening fully, which reduce or block the blood flow from the heart into the main artery of the body, that is aorta, and onward to the rest of the body. When the blood flow through the aortic valve is reduced or blocked, the heart needs to work harder to pump blood to your body. So first thing is that definition, in the definition it is clearly mentioned, that is it is a narrowing of aortic walls. तो इसमें क्या होता है, जो aortic walls है सेम लाइक जैसे हमने मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में पढ़ा था, इसमें भी क्या होता है, जो aortic walls हैं वो नैरो हो जाती हैं, which restrict the blood flow from the left ventricle to the aorta. जो आयोटिक वॉल्स है वो क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड आयोटा में जाता है तो जो एरोटिक वॉल्स होती है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, वापस बैक फ्लो ब्लड का नहीं हो सकता. तो यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, इट रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द आयोटा. यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब आयोटा में जाना है उस समय क्या होना चाहिए, आयोटिक वाल्व ओपन होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे जो वॉल्स की जो लीफलेट्स है, जो डोर्स है, वॉल्स की जो लीफलेट्स है वो क्या हो गई है, नैरो हो गई है. इसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में नहीं जा पा रहा है. सो देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द आयोटा, एंड दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द प्रेशर इन द लेफ्ट आर्ट्रियम. इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड जो लेफ्ट आर्ट्रियम में ही क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कलेक्ट हो गया है, लेफ्ट आर्ट्रियम में वेंट्रिकल में ही ब्लड कलेक्ट हो गया है. लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड बहुत ज़्यादा कलेक्ट क्यों हो गया है, क्योंकि वो आयोटिक वॉल्व के थ्रू आयोटा में नहीं जा पा रहा है. तो जिसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में भी प्रेशर अराइज होगा. नेक्स्ट वन इज कॉज. So first one is congenital heart defect, same like the other valvular disorder, like mitral valve stenosis, mitral valve prolapse or regurgitation. Congenital heart defect can also cause the aortic valve stenosis, and in this the aortic valve consists of three tightly fitting triangular shaped of flaps of or called cusps or leaflets. Some children are born with the aortic valve that has only two cusps instead of three. People may also be born with one, that is called unicuspid, and four quadricuspid cusps. तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे नॉर्मली हम एरोटिक वॉल्व में देखते हैं तो उसमें थ्री कप्स होते हैं, उसमें मतलब थ्री लीफलेट्स होते हैं,
जिससे कि जो एरोटिक वॉल है वो ओपन होता है और क्लोज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कभी कभी कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, किसी में सिर्फ दो कस्प्स होते हैं, यानी कि दो लीफलेट्स होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जो एरोटिक वॉल होने के को क्लोज और ओपन करने के लिए जो डोर्स होते हैं, तो डोर्स यानी कि लीफलेट्स नॉर्मली 3 होते हैं, लेकिन किसी में 2 हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइकस्पिड। And if there is one cusp is there, that is called unicuspid, and if 4, that is called quadricuspid। तो इसकी वजह से क्या है, प्रॉपर क्लोजिंग जो एरोटिक वॉल की नहीं हो पाती और साथ ही साथ प्रॉपर ओपनिंग भी नहीं हो पाती है। Next one is calcium buildup on the wall. Blood repeatedly flow over the aortic wall, and deposit of the calcium can build up on the wall's cusp, and it result in stiffening of the cusp of the wall, and this narrow the aortic wall। बहुत सारे जो कैल्शियम हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, वॉल्स के जो कस्प्स है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वॉल्स की जो डोर्स है यानी कि कस्प्स है वो क्या हो जाती है, स्टिफ। स्टिफ मीन्स कड़ी हो जाती है, रिजिड हो जाती है, और वहाँ की जो ओपनिंग है वो बहुत ही नैरो यानी कि सक्रिय हो जाती है, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में नहीं जा पाता है। Third one is rheumatic fever, a complication of the strep throat infection। You have already know that the rheumatic fever is the main cause of rheumatic heart disease and all type of the valvular disorder, because due to rheumatic fever there is formation of scar tissue in the walls of the heart, and which cause weakening, stiffening of the heart wall, and that's why overall it result in the wall stenosis, wall regurgitation, or walls prolapse। So here this is also this rheumatic fever is also one of the causative factor for the aortic wall stenosis। Other risk factor, first one is old age। Due to age factor there is also chance for getting the risk of aortic stenosis, certain heart conditions like congenital heart disease, or any congenital anomalies like bicuspid aortic wall, any type of infections that can affect the heart, like any type of inflammatory heart disease like in myocarditis, inflammation of myocardium, endocarditis, inflammation of endocardium, epicarditis or pericarditis, that is inflammation of the outermost layer, that is epicardium or pericardium। Having cardiovascular risk factor like diabetes, hypertension, high cholesterol, these also cause the weakening and stiffening of the walls of the heart। Next one is chronic kidney disease, because of the if the patient having renal failure, then also cause the increased workload in the heart। Next one is history of radiation therapy to the chest, and which destroy the normal healthy tissue, healthy muscles of the heart layers, and it will cause the weakening of the muscle of the heart, and also it can damage the walls of the heart। The clinical features we can see in the patient with aortic valve stenosis, same like the other valvular disorder like breathlessness, chest pain, angina, pressure or tightness, or sometime patient feel chest discomfort, fainting, that is also called syncope, palpitation, a feeling of heavy pounding and noticeable heartbeat। Next one is decline in the activity level and reduce ability to do normal activity which required mild exertion। मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि बहुत हमको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है, लो लेवल की एक्टिविटी जो हम इजीली कर सकते हैं, जिसमें हमको थकान नहीं होती, ऐसे वर्क भी पेशेंट नहीं कर पाएगा। हार्ट मर्मर दैट इज़ गैलोप और एबनॉर्मल साउंड, दैट इज़ S3 साउंड एंड S4 साउंड। We can hear it in the patient with aortic stenosis। Next one is shortness of breath, especially when you have been active, fatigue, especially during the time of increased activity, not eating enough, not getting enough weight। Next one is
Diagnostic evaluation are the same like mitral valve stenosis, mitral regurgitation, mitral valve prolapse. All the diagnostic tools, history taking, physical examination are same in the all type of valvular disorder. Next we will come on the surgical management. So in the surgical management there are two management. First one is aortic valve repair. So in the aortic valve repair there is biological valve replacement, open pop-up dialog box. So in this, surgeon repair the aortic valve to treat the stenosis, and generally aortic valve stenosis require the aortic valve replacement. To repair an aortic valve, surgeon may separate the valve flaps that have fused. इसमें क्या करते हैं सर्जन, जो भी जो फ्लैप्स हैं यानी कि जो कस्प हैं जो आपस में फ्यूज्ड हो गए हैं मतलब जुड़ गए हैं, उनको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, और रिपेयर करके उनको अलग अलग सेपरेट करते हैं लीफलेट्स को, जिससे कि प्रॉपर ओपनिंग हो सके और ब्लड का फ्लो हो सके फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू आयोटा. नेक्स्ट वन इज एरोटिक valve replacement. In this, the mechanical valve replacement, open pop-up dialog box. In this, it is often needed to treat the aortic valve stenosis. In this, the surgeon remove the damaged valve and replace it with a mechanical valve or a valve made from the cow, pig or human heart tissue, that is biological tissue valve. इसमें क्या करते हैं, जो सर्जन है वो जो वॉल्स डैमेज हो चुका है उसको रिमूव करते हैं एंड रिप्लेस इट विथ अ मैकेनिकल वॉल, और साथ में क्या करते हैं, एक मैकेनिकल वॉल रिप्लेस करते हैं, एंड विच इज़ मेड अप फ्रॉम द काउ, पिग और ह्यूमन हार्ट टिश्यू. So the diagram of biological valve replacement, that is aortic valve repair. So this is the diagram of aortic valve repair, and this is the floppy valve leaflets. So next one is another surgical management, that is balloon valvoplasty. In the balloon valvoplasty, a long thin tube or catheter to repair a valve with a narrowed opening. Inserting a catheter with a balloon on the tip into an artery in your arms or groin and guide it to the aortic valve. When inflate the balloon, which expand the opening of the valve, the balloon is then deflated and the catheter and balloon are removed. जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये जो एरोटिक वॉल्स है ये बिल्कुल ही नैरो हो गई है. यहाँ पे नैरो होने की वजह से वॉल की जो लीफलेट है वो बहुत ज़्यादा फ्यूज्ड हो गए. तो सबसे पहले हम इसमें एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं. ये कैथेटर इंसर्ट करने के बाद हम इसके अंदर एक बैलून, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने इन्फ्लेट किया. इन्फ्लेट यानी कि यहाँ पे हम बैलून को फुला रहे हैं. उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पे ये जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो वॉल्स हैं जो स्टिफ हो गए हैं और साथ में फ्यूज्ड हो गए हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गए हैं, वो सेपरेट हो जाएंगे. और उसकी वजह से फिर क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉपर ओपनिंग हो जाएगी, जिससे कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में प्रॉपरली फ्लो हो सकता है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ बैलून वल्वोप्लास्टी. Last one is the complication. Aortic valve stenosis can cause the complications like heart failure, because due to the failure of the blood flow from the left ventricle to the aorta, it causes workload and increase the blood volume, which is cause congestion of the left ventricle due to collection of the over blood amount. Next one is stroke. Stroke is caused because due to the failure of the left ventricle by restricting the blood flow from the left ventricle to the aorta, body get not enough blood supply, and due to which there is decrease in oxygen saturation in the body, which is also called the hypoxia. And that's why if there is decreased blood and oxygen supply in the brain, which it cause the stroke. Next one is blood clot. Sometime there is pulmonary embolism is also a complication after the aortic valve stenosis. Next one is bleeding,
heart rhythm abnormality because of the failure of the left ventricle to pass the blood from the aorta to the whole body. Infections can also be there. Infection can also resulting in the patient that affect the heart, like the endocarditis, and sometime death also occur. So next is next and last valvular disorder, that is aortic valve regurgitation. I have already told you about the term regurgitation. Regurgitation in the mitral valve regurgitation. So same like the mitral valve regurgitation, here the term is terminology is that aortic valve regurgitation. So it is a condition that occurs when heart aortic valve doesn't close tightly. In the stenosis, the valve are stiffed and fused together, and there is not proper blood flow from the one chamber to the other chamber. And in this the regurgitation, the heart's aortic valve doesn't close tightly, and because of that there is leaking of the blood. So in the aortic valve regurgitation, it allows some of the blood that was pumped out of the heart main pumping chamber, that is left ventricles, to leak back into it. इसमें क्या होता था, इसके पहले जो हमने एरोटिक वॉल स्टेनोसिस देखा उसमें हमने क्या देखा कि वॉल्स स्टिफ हो गए हैं, प्रॉपर वॉल्स जो हैं वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे सेम उसके अपोजिट कंडीशन है रीगर्गिटेशन। यहाँ पे क्या है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में जा रहा है, वॉल्स प्रॉपरली ओपन हो रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में जा रहा है, लेकिन उसके बाद आयोटिक वॉल कंप्लीटली क्लोज नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से वापस से ब्लड का लीकेज लेफ्ट वेंट्रिकल में हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एरोटिक वॉल्व रीगर्गिटेशन। Causes are the same like the aortic valve stenosis, that is congenital heart valve disease, age factor, any type of infection like endocarditis, pericarditis, myocarditis, rheumatic fever, other disease which can also lead the regurgitation, including Marfan syndrome, connective tissue disease and other disease like autoimmune conditions like lupus, systematic lupus erythematosus, which is also a connective tissue disorder and which cause the weakening of the heart muscles and the weakening of the valves, that can also lead to the aortic valve regurgitation. Any type of trauma, damage to the aorta near the site of the aortic valve, such as damage from the injury to the chest or a tear in the aorta, can also backward flow of the blood through the valve. Risk factor are the same like the aortic valve stenosis, older age, heart conditions like congenital defect, history of infections that can affect the heart like inflammatory heart disease, myocarditis, endocarditis, pericarditis, Marfan syndrome, heart valve conditions, high blood pressure. Next one is clinical features. Clinical features are also same: fatigue and weakness, shortness of breath with exercise, swollen ankle and feet, chest pain, angina, discomfort, lightheadedness, fainting, irregular pulse, heart murmur, sensation of a rapid fluttering heartbeat. That is there is the word fluttering. Fluttering means the waving, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ के लहराने की जो आवाज़ एक होती है वैसी आवाज़ आपको सुनाई देगी. So there is a sensation of rapid and fluttering heartbeat. Next one is surgical management. Surgical management are also same like the surgical management of aortic valve stenosis. In this also, first one is aortic valve repair. In this surgeon may conduct different type of repair including
separating the walls that have fused and reshaping and removing the excess tissue so that cuffs can close tightly. इसमें क्या हो जाते हैं, जो टिश्यू जो लीफलेट्स हैं, जो कस्प हैं, जो फ्यूज़ हो गए हैं, उसको क्या करते हैं जो सर्जन है, एक्सेस जो पार्ट है उनका लीफलेट्स का, उसको कट करते रिमूव करते हैं ताकि प्रॉपर फिटिंग हो सके और जो वॉल्स हैं प्रॉपरली क्लोज हो सके. And doctors may use a catheter procedure to insert a plug or device to repair the leaking replacement aortic valves. The other options like biological valve replacement, open pop-up dialog box, and mechanical valve replacement and aortic valve replacement. In this aortic valve replacement, same like we can replace the damaged aortic valve with artificial aortic valve, or sometime valve made from the cow, pig, or human heart tissue, that is called biological tissue valve. So overall the nursing diagnosis we can make for the patient with valvular disorder, either patient having mitral valve disorder or patient having aortic valve disorder. So first nursing diagnosis is impaired gas exchange related to ventilation perfusion imbalance, as manifested by breathing difficulty, as manifested by fatigue. Next one is decreased cardiac output related to altered contractility, preload and afterload, as manifested by fatigue and weakness. And next one is activity intolerance related to imbalance between the oxygen supply and demand. Knowledge deficit related to activity activity schedule related to recognizing worsening heart failure, medication regarding heart therapies. So these all are the nursing diagnosis. Next one is nursing management for the patient with valvular disorder. Administer oxygen as prescribed to improve the myocardial oxygenation, maintain the fluid and sodium restriction, because in all type of valvular disorder, patient having ascites, swelling in the feet, ankle, so because of that, to reduce the edema, to reduce the ascites, so there is we must advise the patient to restrict the sodium and administer the medication as prescribed like diuretics to decrease the preload. So what is preload? Preload, it is a feeling pressure of the heart at the end of the diastole. Antihypertensive agent like beta blocker, for the example of beta blocker like metoprolol, propranolol, atenolol, calcium channel blocker, nifedipine. AC inhibitor other like inotropic agent to increase the contractility like the digoxins, dobutamine. Next one is anticoagulation therapy for the client with the mechanical valve replacement, because there is chance of coagulation and there is chance of pulmonary embolism. So to decrease the chance of any type of coagulation, embolus or thrombus formation, we will provide the anticoagulant therapy. Next, assist the client to conserve the energy and decrease the myocardial oxygen consumption. So this is preload and afterload. Preload, this is the volume of blood in the ventricles at the end of diastole, and the afterload, resistance left ventricle must overcome to circulate the blood. Other nursing management, post-surgery care is similar like the CABG, activity for 6 weeks, report fever, care for external incision, client education regarding the antibiotics which are recommended prior to the dental work, surgery, other invasive procedure, encourage the client to follow the prescribed exercise, encourage adherence to dietary restrictions, consider nutritional consultation. So these all are the nursing management of the patient with
वल्वुलर डिसऑर्डर। ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट और जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो मैंने बताया है, ये आप किसी भी वल्वुलर डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे फिर वो मिट्रल वॉल डिसऑर्डर वाले पेशेंट हो लाइक स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन, या फिर एरोटिक वॉल से रिलेटेड डिसऑर्डर हो लाइक एरोटिक वॉल स्टेनोसिस और एरोटिक वॉल रिगर्गिटेशंस। थैंक यू।